It's not. ऑल राइट, सो पहला मैच खत्म होने के बाद इंडिया साउथ अफ्रीका का आज सेकेंड T20I की बारी है और हम सभी को पता है कि पहला मैच इंडिया जीत चुकी है और अब सेकेंड T20I की बारी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में है जो कि गुवाहाटी में खेला जाएगा। और इस स्टेडियम के बारे में एक थोड़ी सी बैड न्यूज है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत हाई चांसेस हैं रेन होने के और इवन 40% चांसेस जो रेन के बताए गए थे उसका असर ये देखने को मिला है कि ड्रिजल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वहां पे। क्रिकेटर्स हमारे जैसे ही फील्ड पर पहुंचे उसके बाद से वहां पे ड्रिजल हो रहा है, लेकिन इतना हैवी नहीं है कि क्रिकेटर्स अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे। आई एम गोना वेलकम ऋषभ विद मी ऑन दिस। ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सेकेंड T20I इट इज लाइक हम सभी को पता है कि वर्ल्ड कप से ठीक लास्ट टूर्नामेंट जो प्रीकर्सर जिसे हम कहते हैं वो यही टूर्नामेंट है, यही सीरीज है इंडिया साउथ अफ्रीका की T20I। बहुत इंपॉर्टेंस है सीरीज की इंडिया की इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशंस। हाउ डू यू सी दिस सीरीज की ये क्या हमारे लिए गेम चेंजिंग हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में? Indeed, the series is indeed going to be really important for India going into the World Cup because I mean, as we saw in the first T20, Rohit Sharma made some changes to the squad and gave some much-needed game time to the players who had warmed the bench in the Asia Cup, like Ravichandran Ashwin came into the squad and Deepak Chahar was also brought in. So indeed, it is a precursor, as you just said, precursor to the World Cup, and they will again look to try new combinations, especially considering the fact that we have injured Jasprit Bumrah. So now the team management will really look to finalize the key bowlers, the key seamers who are going to start in the 11 come the first game of the T20 World Cup this month. ग्रेट। सो आई गेस मैच को ये सीरीज तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडिया साउथ अफ्रीका की, बट एक बार पिच रिपोर्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं। आफ्टर ऑल बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट कहती है द पिच वुड बी बॉलिंग फ्रेंडली, द स्पिन बॉलर्स हैव डन बेटर देन द सीमर्स। सो डेफिनेटली पिच रिपोर्ट तो हमें यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली दिखाई पड़ रही है, बट जिस तरीके से इस बारिश का कहर हमें सुनने को मिल रहा है ऋषभ, क्या इफेक्ट डालेगी बारिश आज के मैच में? अगर अगर हम पूरे 20 ओवर्स देखने को मिलते हैं ईच साइड, तो बारिश का असर क्या हो सकता है? क्योंकि हमेशा कंडीशंस गेम को चेंज करती हैं, तो ये कंडीशंस गेम को कितना चेंज कर सकती हैं? I think rain will surely affect the outfield. Outfield is mostly affected like right after when a rain delay happens. So outfield might be slow. And yes, spinners will have a tough time gripping onto the balls because the ball is going to go into the outfield and it's going to get wet. So it's going to be a bit difficult for the spinners to grip the ball and for them to let the according to have a good grip on the ball and let the ball make the ball talk as they pitch it onto the pitch. But given that the fans have been waiting for the game to get underway from a really long time, they must have queued up right from the morning itself. So hoping for that we will get to see some cricketing action later on in the day, even if it's a rain curtailed game. Hopefully we'll get some cricketing action. डेफिनेटली। और इसी के साथ एक बार नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड पे कि आफ्टर ऑल किस तरीके का हेड टू हेड रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि लास्ट मैच इंडिया जीती थी। तो हेड टू हेड एज ऑफ नाउ इज इंडिया हैज वन 12 मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका हैज वन 8। 21 टोटल मैचेस खेले इन दोनों टीम्स में, जिसमें एक का कोई भी रिजल्ट नहीं रहा है, विच मीन्स यहाँ पर इंडिया का अपर हैंड है जरूर, लेकिन साउथ अफ्रीका कोई सस्ती टीम तो है नहीं। हम सभी जानते हैं कि सारे हिटर्स उनकी टीम में है और T20 वर्ल्ड कप की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अपनी टॉप 11 लेकर के उतरेंगे। एक और स्टार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऋषभ, आई वुड like to discuss about it. South Africa has never lost a T20I series in India, and I think that's quite a stat because India में आकर के इंडिया के अगेंस्ट खेल करके South Africa has never lost the series, and this match itself is a series decider. क्योंकि अगर ये मैच South Africa हारती है, so we know कि ये स्टार्ट चेंज हो जाएगा, और अगर वो जीतती है तो फिर यहाँ पे हम थर्ड मैच की तरफ देखेंगे। So do you see कि किसकी तरफ ज्यादा दिख रहा है ये मैच? मतलब ये स्टार्ट चेंज होगा कि नहीं? What do you see? Well, when South Africa came to India in June, we saw another competitive series that ended in 2-2. The rain destroyed the chances of a series result as it came in the 50-20I. This one, hopefully, we'll finally get one winner out of the two teams who have been playing really well. And South Africa will come hard. Make no mistake, they will come hard in the second T20I, having been hammered in the first T20I itself. Or even after we saw the glimpses of it in the first T20I itself, even after posting that low total on the board, you see the way their bowlers bowl. They bowl their heart out. Both Rabada, Nortje, and Parnell, they were all top notch. So we can expect a great fight from South Africa in the second T20I today.
and they will give Indian batters a run for their money for sure. डेफिनेटली। और एक अपडेट आ रही है ग्राउंड की तरफ से, एंड दैट इज कि इसके पहले जो ड्रिजल हो रही थी अभी वो बंद हो चुकी है। जो कवर्स लगाए गए थे आउटफील्ड पे उन्हें हटा दिया गया है, और विराट कोहली टीम से बात कर रहे हैं। हडल चल रहा है वहां पे इंडिया टीम की तरफ से, जिसको लीड कर रहे हैं विराट कोहली। बहुत ही दिनों बाद हालांकि ये सीन देखने को मिल रहा है इंडियन फैंस को, बट आई एम श्योर काफी खुश होंगे इस बात से। रेस्ट आई कम टू द ग्राउंड अगेन ऋषभ। हमने बरसा पारा का पहले भी देखा है, इंडिया और श्रीलंका का एक मैच हुआ था, वहां पर भी वो मैच अबैंडन हुआ था ड्यू टू रेन ओनली। और हुआ रीजन ये था कि बारिश काफी पहले हुई थी, बट चूंकि वहां का इंफ्रा इतना अच्छा नहीं था पिच का कि आउटफील्ड सूख ही नहीं पाई थी, जिसके चक्कर में हमें मैच अबैंडन करना पड़ा। सो आज के भी मैच में काफी हद तक बारिश के चांसेस हैं। तो डू यू सी कि बरसाबारा क्रिकेट स्टेडियम में सिंस इस तरह का इंफ्रा है, तो उसके बाद में इस मैच पर इम्पैक्ट कैसा होगा? अगर बारिश हुई तो मैच के कितने चांसेस हैं, और अगर बारिश होती है तो उसके चक्कर में अगर मैच अबैंडन होता है तो उसका असर इस सीरीज पर क्या पड़ेगा? Indeed, I mean, nobody likes rain. I mean, no cricket fan loves to see cloud coming and interrupting a game. So that is indeed going to be a crucial thing. I mean, fans were again lashing out at the Indian Cricket Board in the last series when the game between Australia and India. It started a late. It started a bit late, even when there was no rain throughout the day. So yes, indeed, I mean, the Indian Cricket Board needs to really work on the infrastructures of several stadiums throughout the country. Being the richest cricket board, that needs to be done. I mean, we see that it happens overseas. We have some stadiums where as soon as the rain gets over, I mean, it takes, I mean, hardly 15, 20, or maybe half an hour, the entire ground is dried up. So I think the Indian Cricket Board desperately needs to work on the technology that they're using to dry the stadium right after the rain. So that is needed to be done. That's something the board must think about. Interestingly, it brings up a really good discussion, like the former cricketers and some of the former like fans as well were discussing कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि हमने देखा, इंग्लैंड में हमने देखा कि देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन कि सिंस कंडीशंस बहुत चेंज करती है, रेन बहुत इफेक्ट करता है क्रिकेट मैच को, सो दे आर थिंकिंग टू गो टुवर्ड्स द इंडोर काइंड ऑफ अ स्टेडियम जहाँ पे रूफ वो एक्सटर्नली आर्टिफिशियली पुट करते हैं। सो but I just want to know your thought on this कि अगर क्रिकेट इस तरफ मूव करता है टुवर्ड्स ये जो एक्सटर्नल आर्टिफिशियल रूफ है, इज इट गोइंग टू हैम्पर द गेम? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारी चीजें होंगी, बट क्या ये इतना हैम्पर कर देगा कि गेम पूरा बदल के रह जाए? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Well, I mean, the wind does affect swing on the ball when seamers get into run into ball and over. So I think that won't be there if we play in a rooftop stadium. I mean, cricket has been played in a roof covered stadium before as well. I remember in Australia during Australia versus rest of the world game way back in 2005 or 2006. I remember, but it hasn't happened as much to really give a data. We don't have a good data to really Right. support the claim whether the game will have significant change or it won't change. I mean, only if it's when it starts happening, we'll get to know what kind of changes will the players will have to keep in mind while playing in a roof-covered stadium as compared to roof open stadium. राइट। और एक मेरे पास यहाँ पे एक अपडेट और है, अपडेट नहीं कहूंगी, एक इन्फॉर्मेशन कहूंगी पिच के बारे में। देयर हैव बीन लो स्कोरिंग गेम्स हियर एंड एवरेज स्कोर इज 145। देयर आर अ फ्यू क्रैक्स एंड द ग्राउंड स्टाफ हैव लेफ्ट अ बिट ऑफ ग्रास एज वेल। सो आई थिंक हमें गेम में बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर लो स्कोरिंग गेम रहने वाला है। हालांकि पिछला मैच भी जहाँ पे हाई स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी लो स्कोर ही गया, 106 बनाए थे वहां पे साउथ अफ्रीका ने। सो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे लो स्कोरिंग, बट यू नेवर नो व्हेन इट्स क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द प्लेयर टू वॉच आउट ऑफ दिस गेम। सिंस हम साउथ अफ्रीका की तरफ से एक बार देख लेते हैं हु इज गोइंग टू बी द प्लेयर टू वॉच आउट, एंड डेफिनेटली व्हेन डेविड मिलर, किलर मिलर इज देयर, who else is going to be the player to watch out? Killer Miller is our player to watch out from South Africa. Let's talk about Virat Kohli कि इंडिया की तरफ से जो प्लेयर टू वॉच आउट है दैट इज गोइंग टू बी विराट कोहली फॉर श्योर, क्योंकि हमें पता है उन्होंने 108 मैचेस खेले हैं, 3663 रन्स बनाए हैं, एवरेज रहा है 50.17 का, और हाईएस्ट स्कोर 122 नॉट आउट। नो डाउट ही इज गोइंग टू बी द प्लेयर टू वॉच आउट ऑफ दिस मैच। रिसेंटली उन्होंने अपनी पहली T20I सेंचुरी लगाई है, सो हैप्पी वी वर, कितना लंबा वेट किया था उस सेंचुरी का, एंड फाइनली वी गॉट इट। बट whom will you pick in this, Rishabh? David Miller over Virat Kohli or Virat Kohli over David Miller in this particular clash? Well, obviously, man, being an Indian fan, seeing the king return to form after that elusive 71st international 100, he finally brought it up in the last month and made the nation wild. People were literally celebrating it like a festival. The king is back, and he will once again show why he is called the king of the cricketing world in today's game.
And coming back to David Miller, he got out on a duck in the last T20, if I'm not wrong, and he will surely look to improve on his below par performance in the last game. He had a good, he played a incredible innings. I remember earlier this year for in IPL during a chase, and that was indeed. I mean, this man has the caliber. He can rip apart any bowling attack on his day. So Indian bowlers need to be wary of David Miller, and they really need to keep him in mind while they come out to bowl if India bowls first. डेफिनेटली, और इसी के साथ एक बार नजर डाल लेते हैं माइलस्टोन्स पे, क्योंकि माइलस्टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सबसे पहले माइलस्टोन की बात करेंगे. क्विंटन डिकॉक की नीड्स 31 रन्स टू कंप्लीट 11,000 रन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स. डेविड मिलर इज 56 रन्स अवे फ्रॉम रीचिंग द लैंडमार्क ऑफ 2,000 रन्स इन T20Is. देन सूर्य कुमार यादव requires 24 runs to get to the milestone of 100,000 runs in T20 internationals. Then Reza Hendricks requires 63 runs to complete 2,000 runs in international cricket. Last but not the least, Rishabh Pant needs 66 runs to get to 1,000 runs in T20 international. सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग. ऋषभ, क्या क्या प्लेयर इंडिया को मिला है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. और जिस तरह की उनकी इनिंग्स भी हमने कल लास्ट मैच में देखी, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही बीती थी वो इनिंग. सो जिस तरह से लास्ट मैच में हमने उनकी इनिंग भी देखी, क्या शानदार शतक, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी और काफी फास्ट था. हालांकि केएल राहुल को उसके चक्कर में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि आपकी पारी स्लो थी और उन्होंने काफी फास्ट खेला. बट हम इसके बारे में बात करेंगे, केएल राहुल की पारी के बारे में. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सूर्य कुमार यादव, बिकॉज ही हैज बीन अ प्लेयर जिन्होंने काफी वेट किया था डेब्यू करने का. इंडिया ने काफी वेट कराया था उनको, एंड देन ट्विटर पे लोग बातें करने लग गए थे. एंड देन द मोमेंट ही started with India, yeah, maybe Mumbai Indians, I'll say, the moment he started off coming to the field, we all were fan of his batting abilities, the way he hit the ball. I think he impresses everyone with the way he plays, right? Indeed. I mean, just look at the way he began his T20I career. He hooked Jofra Archer away for a six over fine leg. Can you imagine? I mean, that is one of the most explosive starts that one can have to his career. I mean, that man is batting on a different pitch altogether. I mean, I saw tweets in the last T20I. People were saying that this man is batting on a different pitch. I mean, when on a pitch when other greats like Kohli, Sharma was struggling, this man came and scored a 33 ball half century. Just imagine, man, we don't know what this man is made of. He's having a great year. I mean, he also became the highest run scorer for India in a calendar year. So, indeed, I Right. mean, he is in the form of his life. He is the X Factor player. And the player to watch out for India coming the T20 World Cup. He's surely going to score a lot more in there. He's surely going to make amends for his below par performances in the last year's World Cup. And he's indeed the player to watch out for India. डेफिनेटली, और इसी के साथ एक बार टॉस अपडेट ले लेते हैं. साउथ अफ्रीका हैज वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्ट टू बोल फर्स्ट. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंडीड अ बिग डिसीजन ऑफ दिस मैच. डू यू सी यहाँ पे ऐसी पिच पे टॉस जीत करके बॉलिंग लेना इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लो स्कोरिंग, राइट? Well, it depends. I mean, whatever the thinking of the captain may have been, maybe he's looking to score and see putting India to test probably to see like what kind of, because no one is aware of what will be a safe score on this wicket. So he's really putting India to test to maybe Indian batters might go out of their way, and the way the new method that Indian team has adopted to play with an aggressive mindset, we will also see that put to test today as well, considering the conditions of the pitch. So yeah, I mean we are going into a World Cup. So Indian team needs to get all their boxes ticked. And one of them is also batting first and setting a good total on tricky wickets. So it will be a good practice for Team India. डेफिनेटली, और इसी के साथ एक बार कैप्टन्स का थॉट ले लेते हैं आफ्टर द टॉस. व्हाट रोहित शर्मा हैज सेड कि यस, जस्ट वुड हैव फील्डेड एज वेल. अगर टॉस जीते तो हम भी पहले फील्ड करना पसंद करते, बट जस्ट वांट टू कम आउट, play some good cricket and entertain the crowd. We have never beaten these guys here, and it's going to take a lot of effort from everyone to do that. And we have come out prepared and pretty much ready for the game. Not too sure about the conditions. When I touch the pitch, there are some stickiness, as we got to be a little cautious at the start. We got solid batting lineup, and it will be a challenge up front. We are playing with the same team. Rohit Sharma has said it. We are playing with the same team. No changes, which means no Umesh Yadav, or we were saying no Siraj. It is going to be the same team. It is going to, we are going to see. एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ा
टॉपिक था डिस्कशन का जब से हमने सुना जसप्रीत बुमराह इज आउट ऑफ दिस T20I सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दो दे आर येट टू कंफर्म दिस कि whether he is gonna still play in T20 World Cup or not. There's still a chance. Rahul Dravid is hoping, Saurav Ganguly is hoping, so are the fans hoping. Rohit Sharma has no other choice, but he has simply looked up to the players who have already bagged in the first T20I. No changes in that. No Umesh, no Siraj. Do you see this is a good move, और या फिर इनको सिराज को मौका देना चाहिए था, because we all know कि सिराज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया when it comes to India. So do you see it is a good move? Well, I mean, I think indeed it is indeed a good move to keep the team unchanged, because I mean, with that kind of a performance, when somebody give like Deepak Chahar gave in the last match, you literally can't bench someone after that incredible performance. So I believe indeed it is a good move by Rohit Sharma. I mean, we are not even not confirmed about Bumrah's injury, and not Right. even not sure about his replacement in the team. So I think Indian team might be looking at Deepak Chahar as a possible replacement. I mean, this could be a hint. This could be a big hint. Like Yeah. Indian team is probably looking at Deepak Chahar as a possible replacement for Jasprit Bumrah in the T20 World Cup squad. So I believe indeed it is a good move. But I think that's a big responsibility, like over Deepak Chahar to replace Jasprit Bumrah, I should say it, because he has been that backbone of Indian bowling. We have seen him taking wickets all over, like across the world. He has taken the wicket when it comes to whether death bowling or maybe the power plays. He is the go-to man for Rohit Sharma or even any captain, like whoever he has played under. So Jasprit Bumrah has been that cage. But do you really see like? I'm not no doubt on Deepak Chahar's talent, but can he really replace Jasprit Bumrah, or maybe some other bowler could have to come up and take the responsibility? Well, according to me, Indian bowling attack. I mean, if you look at the squad, like players like Jasprit, or beg your pardon, Bhuvaneshwar Kumar, Arshdeep Singh, they're of similar speeds. Like they bowl in 130ish kind of speeds, and even so is Deepak Chahar. So if India is really looking for a proper replacement of Jasprit Bumrah, they need to go with someone who has express pace. Someone like Mohammad Shami or Umesh Yadav. I mean, given the fact that the World Cup is going to get played in Australia, where the pitch is bouncy, it has pace, and we need someone with express pace to exploit those conditions. Which, if Jasprit Bumrah does not get fit with right before the World Cup, we'll need somebody else on his part to do that job. And for that, we would require someone like Mohammad Sami and Umesh Yadav, as I just said. Right. So, I was right, yeah. इसी के साथ एक बार प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं. हाउ इज गोइंग टू बी द प्लेइंग 11 ऑफ दिस मैच, सिंस Indian captain already said it is going to be the same team. And when it comes to South Africa, there is one change. आपको उसके बारे में बताएंगे. सबसे पहले टीम पढ़ लेते हैं एक बार. Quinton de Kock, Temba Bavuma the captain, Reilly Rosu, Aiden Markram, David Miller, Tristan Stubbs, Wayne Parnell, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Enric Nokia, and Lungi Ngidi. He is the addition. And then when it comes to India, it is KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant, Dinesh Karthik, Aksar Patel, Ravichandran Ashwin, Harshal Patel, Deepak Chahar, and Arshdeep Singh. सो ये थी हमारी प्लेइंग 11. एक बार इसी के साथ नजर डाल लेते हैं प्लेयर टू वॉच आउट पे भी इस मैच के, क्योंकि सॉरी प्लेयर बैटल इस मैच के, क्योंकि जो बैटल्स हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. इट इज क्विंटन डिकॉक वर्सेस यूजी चहल. रन्स यहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने यूजी चहल के अगेंस्ट मारे हैं 44 बॉल्स खेली हैं, और 6 बार चहल ने आउट किया है क्विंटन डिकॉक को. नेक्स्ट प्लेयर बैटल इज कोहली वर्सेस रबाडा. 41 रन्स बनाए हैं कोहली ने 39 बॉल्स पे रबाडा के, आउट हुए हैं 4 बार. डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर. नेक्स्ट प्लेयर बैटल हम देखेंगे यहाँ पे रोहित वर्सेस रबाडा. डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू रबाडा, रोहित का नाम तो आना ही था. 70 रन्स बनाए हैं रोहित ने अगेंस्ट रबाडा 56 बॉल्स पे, और 3 बार आउट हुए हैं रोहित शर्मा. तो ये है हमारी प्लेयर बैटल इस मैच की. डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे ऋषभ. बट डू यू सी एनी सच इंटरेस्टिंग बैटल जो मैंने अभी रीड आउट करी है? डू यू सी वन सच बैटल इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, जिसको फैंस को भी एकदम ध्यान से देखना चाहिए? Well, indeed, I mean, battle against between Rabada and both Kohli and Sharma. I beg your pardon. Yeah, Kohli and Sharma. So, indeed, I mean, that is going to be a great battle, given the fact that Rabada got both of them out in the last T20, if I'm not wrong. He got the wicket of both of those batsmen. And it'll be interesting to see, like, how do they tackle, how India's top 2 premier batters tackle South Africa's leader of the pace attack in the game today.
डेफिनेटली। और इसी के साथ एक बार नजर डाल लेते हैं सोशल ट्रैकर पे कि आफ्टर ऑल सोशल वर्ल्ड में किस तरह का डिस्कशन चल रहा है अबाउट दिस मैच, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्टिंग ट्वीट्स, क्योंकि हम लोग जो बातें करते हैं कई बार उससे भी ज्यादा बेटर चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। No Umran Malik in India's ODI squad versus South Africa. A good indicator that he might be on the plane to Australia for the T20 World Cup. That's a good news. अगर इमरान मलिक को हम लोग कंसिडर करें तो बीसीसीआई के एंड से एक ट्वीट है, उन्होंने स्क्वाड शेयर किया है यहाँ पे, जिस तरीके का स्क्वाड हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ट्वीट एक बार देखेंगे क्या है। नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास Ajinkya Rahane, remembering the greatest leaders, Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, the men who have contributed their all for the country on the occasion of their birth anniversaries, definitely. And इसी के साथ ऋषभ, हालांकि मुझे याद था बट फिर स्टिल मैं अभी फैंस को एक बार अपनी एंड से और क्रिकेटर के एंड से विश करना चाहूंगी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे फादर ऑफ द नेशन है और स्पोर्ट्स में भी उनका काफी योगदान रहा है। अगर आई एम श्योर बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, बट साउथ अफ्रीका जा करके इटसेल्फ जब महात्मा गांधी ने जब रेवोल्यूशन शुरू किया था तो उन्होंने स्टार्ट किया था फुटबॉल क्लब से, और उन्होंने वहां पर फुटबॉल क्लब खिला करके वहां पे जो रेसिज्म था, कलरिज्म था मोर ओवर, उसको उन्होंने क्लब्स में प्लेयर्स को साथ में खिला करके वहां से कलरिज्म को एंड करने की कोशिश की थी। और इसके ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। सो डेफिनेटली हमारे फादर ऑफ द नेशन ने पूरा फोकस किया था क्रिकेट और स्पोर्ट्स को और बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं किया था उन्होंने अपने प्रोसेस से। एंड आई एम श्योर हम सभी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की वर्ल्ड में और किस तरीके से लोगों को बांधती है और एक साथ खिलाती है। इसकी काफी हिस्ट्री है और काफी सारी चीजें हैं नोन में। Well, back to this today's match. Other than Jasprit Bumrah, other than Deepak Chahar, other than Mohammad Siraj और उमेश यादव, we have one more person. और मैं स्पिनर की भी यहाँ पर बात करूंगी, that is अक्षर पटेल. He is like a man who has really replaced रविंद्र जडेजा. Like उनकी इंजरी चल रही है, he is also missing out. बट उनकी कमी खल नहीं रही है बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे. एंड इवन अब तो बातें उठने लगी है कि इफ यू वांट अ विकेट जस्ट कॉल अक्षर पटेल, he will get you a wicket. सो हाउ डू यू सी दिस अक्षर पटेल का एकदम से रेवोल्यूशन की? जब तक जडेजा थे तब तक हमें लग रहा था कि जडेजा नहीं तो क्या होगा, बट नाउ वी डोंट हैव जडेजा, अब हमें दिख रहा है कि क्या होगा, अक्षर पटेल हो गया हमारे पास. सो हाउ डू यू सी दिस? I mean, that is a clear sign of Indian cricket's depth. I mean, you just see, as soon as a star player gets injured, someone comes up and bowls his heart out. I mean, he was literally waiting for an opportunity. This man seems hungry for wickets whenever he goes out to bowl. He gets a wicket or two for the team, does the job pretty well. All he needs to do is just play a few cameos as well, and he'll surely fill the complete role of Ravindra Jadeja, and India won't be worried going into the World Cup. I remember him grabbing the opportunity in the England series last year as well when Jadeja was not there. He bowled his heart out there as well and got some crucial wickets for the team. So indeed, Akshar Patel has grabbed the opportunity with both hands and come out on top and show the world that he is made for any format. Just call him on and he will deliver. और वैसे भी जिस तरह का कॉम्पिटिटिव लेवल है इंडियन क्रिकेट टीम में, वहां पे ना मौके बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो भुनाने वाला चाहिए होता है, वरना वो मौका हाथ से निकल जाता है. ऐसा ही सूर्य कुमार यादव ने किया, ऐसा ही यहाँ पर अक्षर पटेल ने किया कि जैसे ही मौका मिला और उससे उन्होंने फट से भुना लिया. और इसी के चलते हमें रविंद्र जडेजा के बाद मिल गए अक्षर पटेल, जो कि अब इंडिया के लिए विकेट्स लेते हैं, जिसकी हमें बहुत जरूरत थी. आने वाले टाइम में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के क्या होता है, अक्षर पटेल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से इंडियन बॉलिंग परफॉर्म करती है, सेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बट इसके पहले हम नजर रखेंगे आज के मैच के ऊपर, विच इज सेकंड T20I, और इस पर बात करेंगे आफ्टर द मैच. आप लोगों से मिलेंगे और बताएंगे आफ्टर ऑल क्या कुछ हुआ और हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द थर्ड T20I और मे बी सीरीज और मे बी T20 वर्ल्ड कप, गॉड नोस. तो इसके बारे में बात करेंगे. क्रिक ट्रैकर में बने रहिए इन दी एयर शो में, और साथ ही जानते रहिए क्रिकेट के बारे में. आप इसके अलावा हमें वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं टू गेट ऑल द अपडेट्स. थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर ज्वाइनिंग मी इन प्री मैच शो. पोस्ट मैच में मिलेंगे सभी फैंस से और बात करेंगे आज के मैच के बारे में. तब तक के लिए बाय बाय.